All right, good morning, students. Today we are going to be continuing with Political Science Chapter 3, Part 2. Our objective for today is students will be able to take notes on various political parties in India. India में बहुत सारे political parties हैं. In the previous class we had learned that India follows a multi-party system. यानी बहुत सारे parties हैं जो election में हिस्सा ले सकते हैं and they can try and form a government in our country. All right. So today we're going to take notes on these various political parties in India. So what are we learning today? We're going to learn about 7 different parties in India that are very well known and well established. All right. First one is the Indian National Congress. Second is the Bharatiya Janata Party. Third is the Communist Party of India, not community, but Communist Party of India. Fourth one is Communist Party of India, Marxist or CPIM. Right? Then there's the Bhujan Samaj Party. Then there's a Nationalist Congress Party. There's a Trinamool Congress Party. All right. So these are the 7 parties we'll be going through today. Starting with the first one, Indian National Congress. All right. First point. The Indian National Congress was established in 1885. At that time, it was a movement of combined ideologies working for national independence. All right. 1885 में Indian National Congress हुआ था established, and at that time what was it? It was not like a party. It was not a political party, but it was a movement. All right. वो एक group of people थे who were working towards freedom. All right, towards national independence. इंडिया के independence के लिए वो लड़ाई कर रहे थे उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट से. After independence, the Congress was established as the dominant party in the country. लेकिन जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, ये जो कांग्रेस का पार्टी है वो एक एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी बन गया जिसमें उन्होंने हमारा गवर्नमेंट बनाया इंडिपेंडेंस के बाद. ऑलराइट. एंड सिंस देन इट वाज अ वेरी डोमिनेंट पार्टी इन द कंट्री. सिंस देयर वाज नो अदर मेजर पॉलिटिकल पार्टी, कोई दूसरा पार्टी था ही नहीं उनसे मतलब इलेक्शन में लड़ने के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम अ सिंगल डोमिनेंट पार्टी इन आवर कंट्री. वी लर्न दिस इन द लास्ट लेक्चर. Third point, it follows the policy of secularism, all-round development, equal rights and welfare for minorities and disadvantaged sections of societies. Alright? तो वो कौन से पॉलिसी को फॉलो करता है, कौन से आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? सेक्युलरिज्म, यानी ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. ऑल राउंड डेवलपमेंट. ऑलराइट. डेवलपमेंट सिर्फ एक जगह पे नहीं होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए. इक्वल राइट्स, सब हर किसी को अपने हक इक्वली मिलने चाहिए. एंड वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और बाकी लोगों को कैसे मदद करेंगे, दैट इज द crux, or that is the ideology of the Indian National Congress. And Sonia Gandhi and Rahul Gandhi are its two primary leaders. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, they all come from a family of Gandhis, all right, and currently they are the leaders of the Indian National Congress. All right, let's move on to the next one, Bharatiya Janata Party, or BJP as we know it. Now, first point, the Bharatiya Jan Sangh was established in 1955. This party was merged with the Janata Party in 1977 to defeat the Indian National Congress during the elections. अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत समय तक गवर्नमेंट बनाता रहा विदाउट हैविंग एनी कॉम्पिटिटिव और एनी कॉम्पिटिशन पार्टी. ऑलराइट. सो भारतीय जन संघ वाज एस्टैब्लिश इन 1955, लेकिन ये जन संघ जो है अकेले कांग्रेस को नहीं हरा पा रही थी. सो व्हाट डिड दे डू? देन देयर वाज अनदर पार्टी कॉल्ड जनता पार्टी. तो ये जन संघ और जनता पार्टी दोनों मिल गए 1977 में टू डिफीट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, and they defeated the Congress in the elections in that year. However, the Janata Party could not work due to the internal issues and had to split. Alright? लेकिन जनता पार्टी के अंदर ही अंदर इश्यूज चल रहे थे कि कौन लीडर बनेगा, who will represent the party, alright? And because of these internal issues, they had to split. Then a new party was established in 1980 known as the Bharatiya Janata Party. इसके वजह से जन संघ वालों ने क्या किया? They made a new party in 1980, alright? Known as the Bharatiya Janata Party, and it stands for the protection of Indian culture and tradition and works on economic reforms. भारतीय जनता पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, मेन एम क्या है कि इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को बनाए रखना. ऑलराइट. दे वांट टू एंश्योर दैट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया इज वेल मेंटेन्ड, and they work on economic reforms. We all know, for example, Modi worked on demonetization. That was an economic reform. He brought changes in the LPG gas cylinder subsidy. That was another economic reform. Okay. Narendra Modi and Thawar Chand Gehlot are its major members. On top, you can see the pictures of Narendra Modi on the left-hand side and Thawar Chand Gehlot on the right-hand side. Alright. Now, let's move on to the next party. Communist Party of India, or CPI.
Okay. Now, the Communist Party of India was established in 1925. It is based on the communist ideology. Now, what is a communist ideology? A communist ideology is basically a idea where uh, a government is supposed to provide to all its people, all right, and all kind of wealth, all kind of resources have to be distributed equally, all right. That is a communist ideology. Now, it works for the welfare of laborers and workers and opposes capitalism. वन मोर फीचर ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इज व्हाट कि वर्कर्स और लेबरर्स पे ज़्यादा फोकस होता है, ऑलराइट. सिर्फ जो लोग कमा रहे प्रॉफिट बिजनेसमैन उन पे ये नहीं फोकस नहीं होता, लेकिन जो लोग रोज़मर्रा के वर्कर्स है, डेली लेबरर्स है, ऑलराइट, छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, उन पे ज़्यादा फोकस है. सो इट वर्क्स द वेलफेयर ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स एंड इट अपोजेस कैपिटलिज्म. प्रॉफिट बनाने के लिए काम मत करो, डेवलपमेंट के लिए काम करो. दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड कम्युनिज्म, ऑलराइट. In 1960, the party split into two over the issue of whether they should accept the principles of Communist Party of China or Soviet Union. अभी कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया में बहुत सारे जगहों पे है, ऑलराइट. एंड टू मेजर प्लेसेस वेयर इट्स फाउंड इज चाइना एंड सोवियत यूनियन, जो पहले रशिया होता था, ऑलराइट. सो चाइना और सोवियत यूनियन के आइडियाज के बीच में द पार्टी वाज स्प्लिट, ऑलराइट, कि हम कौन से इंटरनेशनल पार्टी के प्रिंसिपल्स या वैल्यूज को फॉलो करें. आर वी फॉलोइंग चाइनाज वैल्यूज, आर वी फॉलोइंग सोवियत यूनियन वैल्यूज, ऑलराइट. और इसके ऊपर पार्टी टूट गई. एंड बिनोय विश्वम इज वन ऑफ द मेजर लीडर्स ऑफ द पार्टी. नीचे बिनोय विश्वम का पिक्चर दिया गया है, ऑलराइट, एंड ही इज वन ऑफ द मेजर लीडर्स ऑफ सीपीआई करंटली. नाउ इट स्प्लिट इनटू टू, ऑलराइट. सीपीआई के दो हिस्से हुए थे एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट, दैट्स नोन एज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, Marxist or CPIM, alright. Now, this party was formed during the split of the CPI in 1964. ये पार्टी तब बना था जब CPI split हुआ था 1964 में. It follows the ideology of Marxism and communism, alright. Marxism क्या है? Remember we studied about Marxism in history, where we talk about the class struggle, alright. The history of mankind, इंसानों का जितना भी history है, there has always been some struggle between the higher and the lower class, or the higher caste and the lower caste, all right. And this party follows that idea कि lower classes, lower caste को बहुत सारे opportunities नहीं मिल रहे, उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, injustice हो रहा है, all right. So they are trying to address that, okay. It also opposes the idea of imperialism. अभी सीपीआई क्या है? सीपीआई स्टिल फॉलोज मेनी गवर्नमेंटल रूल्स रेगुलेशंस, लेकिन सीपीआई-एम का क्या कहना है कि अ गवर्नमेंट दैट इज अ वन पार्टी गवर्नमेंट दैट इज रूलिंग ओवर द कंट्री फॉर 5 years इज ऑलमोस्ट एज गुड एज अ किंग रूलिंग ओवर द पीपल, ऑलराइट. इज ऑलमोस्ट एज गुड एज अ किंग रूलिंग ओवर द पीपल. तो they want to bring about a change in the system of the government by removing elements of imperialism from it. Imperialism का मतलब क्या है? The rule of kings or queens, all right. तो उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से या हमारे गवर्नमेंट में से जो भी कुछ ऐसे फीचर्स है जो किंग्स एंड क्वींस करते थे, उनके खिलाफ जाना है, उसको completely हटाना है, all right. And that's the aim and objective of CPIM. It protects and support landless laborers, farmers एंड वर्कर्स. जिन लेबरर्स के पास लैंड नहीं है, खुद की कोई ज़मीन नहीं है, फार्मर्स है, वर्कर्स है, उनको वो सपोर्ट करते हैं. एंड AM आरिफ इज अ मेजर मेंबर ऑफ द CPIM पार्टी, ऑलराइट. AM आरिफ, नीचे उनका पिक्चर दिया गया है, इज द लीडर ऑफ द CPIM पार्टी एंड इज अ मेजर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट, ऑलराइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बहुजन समाज पार्टी और BSP, okay. The Bahujan Samaj Party was established in 1984 with the objective of protecting the interest of the minorities. Minority में जो लोग हैं, scheduled class, scheduled tribe, other backward classes, alright, Christians, Muslims, etc. BSP उनके लिए ज़्यादा काम करना चाहता था और उनका ऑब्जेक्टिव वो था कि वो उनके इंटरेस्ट को, उनके जो भी ज़रूरतें हैं, उनके जो भी डिमांड्स है, वो पूरे कर सके वो, alright. It follows a socialist ideology, alright, and focuses on the need of SC, STs and OBC. Socialist ideology का basic underlying factor क्या है कि सबके सबको डेवलपमेंट मिलना चाहिए इक्वली, ऑलराइट. इन अ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल मेकिंग प्रॉफिट. कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में फर्क और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में फर्क क्या है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में
द आइडिया ऑफ प्रॉफिट, किसी को भी प्रॉफिट कमाना, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन, बड़े बड़े फार्मर्स, स्टेक होल्डर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, इन सबको प्रॉफिट कमाने का ज़्यादा रूम नहीं दिया जाएगा. ऑलराइट, दे विल बी टैक्स हेविली एक्सेट्रा. लेकिन इन अ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी दे विल इट फोकसेस ऑन वेलफेयर फॉर ऑल. फिर भले तुम प्रॉफिट बनाओ या लॉस बनाओ या जिस तरह से फंक्शन करना चाहो तुम कर सकते हो. ऑलराइट, बट to ensure that all of society is developed, that is what a socialist ideology is all about. And it focuses on the need of SC, ST and OBC, scheduled caste, scheduled tribes और OBC, इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है. Alright, BSP ने. And it refers to them as the majority of India and aims to give power to these people. BSP के लिए क्या है, जो लोग शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब्स में है, OBC है, उनके हिसाब से वो ये जो लोग हैं वो मेजॉरिटी है इंडिया के. इंडिया में ज़्यादातर SC, ST, OBC है. All right, and therefore they want to give power to these people. All right, and Mayawati is an important leader of the party. You must have already seen pictures of Mayawati Didi. All right, and she is an important leader of the party. Now, next is Nationalist Congress Party. All right, in 1999 there was a split in the Congress Party, and the Nationalist Congress Party, or the NCP, was established. They believe in the values of democracy, equality and secularism. All right, democracy, equality and secularism, almost similar to Congress ke values only. All right, it was in power in Maharashtra from 1999 to 2014. महाराष्ट्र में NCP का जो राज था वो बहुत सालों तक चलता गया. All right, and it was a part of the coalition government formed with the Indian National Congress from 2004 to 2014. एनसीपी को मदद भी मिला था इंडियन नेशनल कांग्रेस से. देखो, स्प्लिट करने के बाद भी पार्टीज कैन वर्क विथ ईच अदर. ऑलराइट, रिमेंबर, उनको पावर में रहना है ताकि वो लोगों की मदद कर सके. तो कभी कभी पावर में रहने के लिए यू हैव टू कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर. ऑलराइट, सो it was part of the coalition government or the combined government with the Indian National Congress from 2004 to 2014. Sharad Pawar is an important leader of the party, and Sharad Pawar is an important leader of the NCP currently. Now, Trinamool Congress Party. The Trinamool Congress Party was established in 1998. Alright, the Election Commission of India gave it recognition in 2016. 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था यह पार्टी, लेकिन 2016 में इट गॉट रिकग्निशन. पार्टीज को अगर कंपटीशन में रिकग्नाइज होना है या फिर देश में रिकग्नाइज होना है, उनको अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना है, देन दे हैव टू गेट एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स. ऑलराइट, बहुत सारे स्टेट से उनको कम से कम 6% वोट्स तो मिलने ही चाहिए. ऑलराइट, एंड दैट्स द रूल ऑफ द ECI और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ, it is also known as the All India Trinamool Congress or AITC. Alright, उनका एक्चुअल नाम क्या है? AITC, All India Trinamool Congress, लेकिन उनको शॉर्ट में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं. It follows the idea of anti-communism, secularism and protecting the interests of the weaker sections of society. AITC क्या करता है? एंटी कम्युनिज्म के आइडिया को बिलीव करता है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हमारे देश के लिए ठीक नहीं है. ऑलराइट, and it will only damage the economy and the politics of our country. तो communism हमारे लिए नहीं चलेगा. So it's a direct rival to CPI or CPIM. Alright, and protecting the interests of the weaker sections of society. अलग अलग religions, अलग अलग sections of society जिनको ज़्यादा opportunities नहीं है, उनकी मदद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई गई. Alright, and Mamta Banerjee is an important leader of the AITC. All India Trinamool Congress का जो जो लीडर है वो है ममता बनर्जी, एंड शी इज वेरी वेल नोन इन द पॉलिटिकल सर्कल्स ऑफ इंडिया. विद दैट वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर लेक्चर स्टूडेंट्स. दिस इज द क्वेश्चन आई वांट यू टू आंसर टुडे. डिस्टिंग्विश बिटवीन द भारतीय जनता पार्टी एंड द बहुजन समाज पार्टी. वो कब बनाए गए हैं, उनके लीडर कौन है, उनका क्या आइडियोलॉजी है, वो स्प्लिट हुए कि नहीं हुए. ऑलराइट, this is the only one question I want you to answer today. With that, we've reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a voice note or a message. I hope you have a nice day.